एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फैनेटिकल ट्रैवलर। दिस इज रितिका। आई होप आप सब हैप्पी हेल्दी और सेफली हो। हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। कहाँ के लिए? लॉन्ग बीच एक्वेरियम ऑफ पैसिफिक, लॉन्ग बीच देखने। पर हमेशा की तरह इन दोनों ने लेट कर दिया। नहीं, हम सबसे पहले हाँ, दीदी आज सबसे पहले रेडी हुई। सबसे पहले रिया रेडी हुई। हम तीनों ही रेडी हो गए थे। जो लेट है ना बेटा? पता ही है सबको। सबसे पहले तुम रेडी हुई थी ना, कोई क्रेडिट ही नहीं देता। ओए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? व्लॉग में कोई छींकता है क्या? सॉरी बोलो। इनके अपने अलग एटीट्यूड है। क्या हुआ? ऐसे शांत शांत क्यों? मुंह तो बंद कर लो अंकल। बंद करो। एक्वेरियम के अंदर। यहाँ की एंट्री है $44। अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड या आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो आपको $10 का ऑफ मिलेगा। और इसी के आसपास है लॉन्ग बीच हार्बर, तो वहाँ पे जा सकते हैं। एक ही टांग है क्या इसके गर्दन को क्या हुआ है ही नहीं। एक टांग पे खड़ी होगी। चिड़िया ऐसी होती है क्या? ये कहाँ से आई है? यहाँ बैठी है। पेंगुइन जैसी लग रही है। क्या खाई हो? फ्रेंच फ्राई, टमाटो केचप, नूडल्स। तो फिर गुआकामेली क्यों निकाली? कल खाई थी ना। Across the Earth's tropical ocean, there is widespread bleaching of coral reefs. Many are dead or dying. Coral reefs have been around for millions of years, but the reefs of today grew when ocean temperatures were cooler. Now, the ocean is warming 40% faster than was predicted just a few years ago. In the past 30 years, we've lost more than 20% of the tropical coral reefs to ocean warming, and the temperatures keep rising. Good! Yay! You got some A for doing that, and then we're gonna go with the crate. So work! That's it! And see if this time she's got it worked out, and she does. That's a beautiful landing. She'll catch a flying fish in midair, because that's what they've been known to do. Maybe a squid. You can give her applause, absolutely. Absolutely, she's a big ham. She loves attention. There you go. Good job, Sula. Yeah. So the fishermen tell us stories about them, because they're the only ones that really see them on a daily routine. Those islands that were lost by the birds, try to restore it back to their natural state so the birds can come back and do what they've been doing all this time, and that's taking care of the coral. Well, that was Sula, our red-footed booby. She did an amazing job.
जाओगे क्या? ये तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाह रही। नीचे से ये भी स्विमिंग कर रही हैं। Chris, he is in there with the animals. Chris helps really help our California sea lions move on land and in water. As you guys got to see with one of our California sea lions right here, Chris, I got a really good look at one of them. They were able to watch that California sea lion, I believe it was Chase, come out onto the land and move around, show those front flippers off and those back flippers off. Now they are able to move quite nice in the water. We're kind of getting a decent look at it right now. They have a unique movement, Chris, that allows them to move quite easily in the water. That kind of involves their hips. What is that movement? Yeah, it's something similar to what dolphins do as well when they jump out the water, do that rainbow arching motion. It's actually known as porpoising, as you can see in kelp forests. Absolutely. I have a question for y'all. Who here is from California? Raise your hands. All right, and of those people, murky. Yeah, it's very, very murky, and that means we cannot see to the bottom of the ocean. That murkiness really allows our California sea lions to hide in plain sight. As someone who's been on a boat, I've had a hard time seeing our California sea lions in the water unless they are doing that porpoising moment, that movement, I should say. It really easily allows them to hide in the water from the predators, but make it easier to catch those schooling fish and squid, especially in our thriving kelp forest right off of our water. They move a little bit differently, don't they? Absolutely. So they're going to use their short front flippers to help them steer in the water, but they're going to use their hump to push their way forward. And you'll notice that when they go up against the glass right here, or maybe even in the underwater tunnel. Now, right now, these populations of harbor seals and California sea lions are doing pretty well, and we know this because of the vocalization that they have. Isn't that right, Susan? Yeah, absolutely. Again, all of us here today. Now, Chris and I, we thank everyone for being here today. We hope you enjoyed this show. We will stick around for a few minutes if you have any questions, and we hope that you have a great rest of your day here at the देखो देखो चली गई। हाँ चली गई। तो क्या? क्या? Where is your teeth? Where are your teeth? Wow. क्या हुआ? अच्छा? मींढा का क्या? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? हंसी आ रही है अब। फोटो खिंचाते टाइम नहीं आती। फोटो खिंचाते टाइम नहीं आती है। अब बदमाशी कर दिया। Where are your teeth? Where are your teeth? इधर देखो। इधर देखो। ये बेटू। बेटू। ये बेटू। अब आशो। बेटू क्या कर रहे बेटा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटू? क्या हो रहा है? कैमरा कॉन्शियस हो। कैमरा आते ही हंसना बंद कर देती है। ये तो उसकी बहन है। ये क्या है? छोड़ दो। छोड़ दो। आज मैं छुट्टी नहीं खाई। खिला नहीं रहा। Ahoy there! अच्छा इसीलिए उसको ऊपर पोटी कर दी थी। हाँ चलो चलो। अरे नहीं कितने खेलना है तुम्हारे? ओ बैठ गई। इसको क्या हुआ? अरे उतर दो मेरे ऊपर से। इसको क्या हुआ यार? अरे उतारो ना। लेके चलो। देख रही मैं कान में न चली जाए। अब तो को बुला दे तो अब नहीं आ रही है। अच्छा ये भी तो है। वो खिला रही थी कटोरी में लेके तो उसके पास चढ़े आ रही थी तीनों। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे ब्लॉग की तरफ। बस
गिफ्ट शॉप में जाना जो हमेशा जाते हैं हम लोग। और आप इस व्लॉग को एंजॉय करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलती हूँ आपसे अभी तुरंत नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।